जलवायु तब्दीलियां अजकल एक चिंता का विषय बनिया हुई ने, जिस मुश्किल नाल नजीठन लई कई समाज सेवी संस्थावां अपना योगदान पा रही ने। अजिही एक संस्था है ईको सिख कैनेडा, जिन्हां वल्लों सिख अते देश के होरनां भाईचारिਆਂ नाल मिल के लोकां नूं लगातार विगड़ रहे वातावरण प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीते वीकेंड ईको सिख कैनेडा ने गुरु नानक देव जी के सन्मान विच मैपल के रुख लगा के अपने इस साल के ट्री प्लांटिंग इवेंट की शुरुआत की। गुरबाणी दे विच एक लाइन है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ते माता जिहड़ी मदर नेचर है वो साडी मदर है, ते असी उन्होंने प्रिजर्व करना ते उहदे लई कुछ असी पे बैक करना चाहुंदे हैं। ते उस इनिशिएटिव दे लई असी इत्थे सारे इकट्ठे होए हैं कि असी गुरु नानक दा मैसेज स्प्रैड करिए ते उन्हां दे दिते होए राह दे उत्ते चलदे होए असी ट्रीज़ नूं प्लांट करिए। सो नॉट ओनली कि असी सिख बीइंग सिख, बट एक वाइडर जिहड़ा हैगा साडा ऑब्जेक्टिव सारी दुनिया दा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਜ਼। even yesterday Google Doodle, they released it, they showed the difference between last 20 years, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ impact आ चुका है साडे climate दे उत्ते। So we need to act now. Been taking from Guru Gobind Singh Ji's teachings that the human race is one. It's going to take all the Sikhs doing seva and working together with Sikhs, but setting an example for the rest of humanity and the rest of the world to follow our lead, right? To help promote, because humanity's biggest threat right now is climate change, global warming. If it continues, famine, agriculture will die down. People will be fighting over food. They'll be fighting over inhabitable land with increased flooding and places not being able to be habitable. And I think that's one thing we're trying to work on with some of the technology we're creating through EcoSick, is an app that actually tracks carbon footprints per Sikh in Canada or the world to help support our measurable benefit, but then Gurdwaras could leverage that too in terms of their gauge. So being able to be a correspondent to show or measure or promote to Gurdwaras how they can become more energy efficient and limit their carbon footprint is something that we're looking into as well, and working with EcoSeek India on that initiative. ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਕਟਿੰਗ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, and that's why Punjab is going to be desert soon, because the trees are already been taken away. So ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, we are far behind, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਫਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਟ it's late now for us. But we are never late, so let's get started with it. For people to plant their own food, I think yes, sustainability is top of mind for everybody. And you're seeing that too with some Gurdwaras are actually planting, and we're talking to some of them as well. Gurdwaras planting their own food for langar, right? So why not have fresh plants for langar? It's more sustainable, and it is something that helps the environment. So those are things that people have to start getting used to and thinking about, because my son was born on our first planting event, and we go back there and we talk about it, and we show him how the trees are grown relative to him. He's turning 3.